Hello everyone, today we will learn about steps of recombinant DNA technology, PCR and bioreactors. These topics are included in chapter Biotechnology Principle and Processes, which is chapter number 11 in 12th class biology book. Let's start it. Recombinant DNA technology steps. Recombinant DNA technology, that is RDT. Its main steps include: first step is isolation of DNA, second is fragmentation with the restriction endonucleases, third isolation of desired DNA fragment, next step is the ligation of that DNA fragment. जब हमने एक बार उसको isolate कर लिया कि हमें कौन सा DNA fragment चाहिए, अब बेटे इसको हमें ligate करना है with the vector molecule, and then transforming the recombinant DNA into the host, then culturing the host cells in the medium at large scale in bioreactors, and then extraction of the desired product. So these are the steps of recombinant DNA technology. We will study about these steps in detail in next slides. Now first step is the isolation of the genetic material. How the genetic material is isolated from the cell. As we know that genetic material in most of the organisms is DNA, in certain viruses it is RNA, but here we need the target DNA. Mostly we use the DNA as a target gene or gene of interest. So firstly we have to isolate this DNA. This DNA is found in the cell along with the proteins. आप अगर सेल के अंदर देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनालिज हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, RNA, DNA एंड प्रोटीन्स हैं, बट हमें इसमें से क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ DNA. तो सो वी हैव टू ट्रीट द सेल विद सर्टन एंजाइम्स ताकि सिर्फ हमारे पास जो बाकी बचे वो DNA हो. If we are using bacterial cell, then we have to use lysozyme firstly, because lysozyme will cleave the cell wall of the bacteria. And if we are using plant cell, then we will use the enzyme cellulase. If fungus cell is there, then we will use the chitinase. These enzymes will break down the cell wall of the bacteria or plant cell or fungus, and then the cell membrane is hydrolyzed by using lipases and proteinases. RNAs will cleave the RNA molecule, and the only left out part will be the DNA, which can be precipitated out by using chilled ethanol. जब आपने इस सेल के एक्सट्रैक्ट को लाइज करके सारी ट्रीटमेंट्स दे दी, सारे एंजाइम से ट्रीट करवा दिया, जैसे कि लाइपेजेस, RNAs, प्रोटीएजेस, आपके पास जो बाकी बचेगा दैट इज DNA. यू कैन नाउ ऐड चिल्ड इथेनॉल टू द टेस्ट ट्यूब एंड यू विल गेट DNA स्पूल. आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, आपके पास ये बेटे DNA आ जाएगा. ये आपको थ्रेड जो दिखा रखे इन दिस डायग्राम, दिस इज ऑफ DNA. Now next step, you have to do the cutting of DNA at specific location. For cutting the DNA, you have to use restriction enzymes, which are the molecular scissor. So in this diagram, the DNA it is shown that how we use the restriction enzyme here. Hint 3 is used to cut the DNA, and after the treatment of restriction DNA with the restriction enzymes, we are getting sticky ends. We will get these fragments, and then we have to electrophorose these fragments on the agarogel electrophoretic gel, and by the process of electrophoresis we will separate out the different fragments of DNA. Now next step is the isolation of the desired DNA fragment. आपने एक बार सेल से DNA आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवाया, फ्रेगमेंट्स बने, बट सारे फ्रेगमेंट्स आपको नहीं चाहिए. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड फ्रेगमेंट. वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? बाय रनिंग दिस फ्रेगमेंटेड DNA on the gel electrophoretic apparatus. Here in this diagram you can see the gel electrophoretic apparatus. The gel which we will use for separating the DNA bands or DNA fragments is the agarose gel. ये जो gel दिखा रखा है आपको, ये agarose gel है. In this diagram you can see 4 wells are there, and in these wells we will put the DNA after treating with the restriction enzymes. These fragments will run on the gel, and the largest DNA fragment will remain on the top of the gel and smallest will move to the farthest because of the sieving effect of the gel as well as due to the charge on it. In vivo जो DNA पे charge होता है, that is negative charge, due to which the DNA will move toward the positive electrode.
अब आपने इसको रन कर लिया, आपके पास फ्रेगमेंट्स आ गए. इनको आप विजुलाइज कैसे करते हैं? बाय पुटिंग अ स्टेन एथेरियम ब्रोमाइड and exposing the gel to the UV light radiations, due to which you will see UV light, you will see orange color fluorescent bands on it. अब suppose आपको जो desired fragment था वो ये वाला है बेटे. Now what you have to do, you have to elute it out. आपको इसको बाहर निकालना है. You will cut this gel piece along with this DNA fragment, और इसमें से आप DNA elute out कर लोगे, purify कर लोगे, and then you will use DNA for the next step. नाउ सपोज आपके पास जो डीएनए था, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो बहुत कम है, तो आपको उसको एम्पलीफाई करना है. फॉर एम्पलीफाइंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू यूज अ टेक्निक नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. यू कैन सी देयर इज अ PCR machine. We will add DNA sample to this machine. We will add primers. We need nucleotides. We need certain enzymes like Taq polymerase, buffer solution, and this is the Eppendorf tube which is known as a PCR tube, जिसमें हम ये सब कुछ डाल देंगे, and then we will put it into the thermal cycler. आपको बेटे इसमें multiple copies of DNA मिलती हैं. By this process you will get multiple copies of DNA. This method was devised by Kerry Mullis in 1983. Now what is PCR? इसकी डिटेल हम अब पढ़ेंगे कि PCR साइकिल है क्या. PCR is a polymerase chain reaction. It consists of 3 steps: denaturation, annealing, and extension. By using this process, the DNA get amplified, and here we use a thermostable DNA polymerase for the amplification or for the extension process, which is the thermostable DNA polymerase is Taq polymerase, which is obtained from the Thermus aquaticus. Thermus aquaticus is a bacteria. This bacteria can tolerate 100 degrees Celsius of temperature. It means its enzymes or this bacteria remain active at high temperature. And in the first step of the PCR, when we will do the denaturation, here the PCR cycle is shown to you. First step is, this is the gene of interest for you. Red part जो pink सा आपको दिखाई दे रखा है, that is the gene of interest for you. Our DNA is double stranded. हम इसे सबसे पहले हीट करेंगे. हीट करना मीन्स डीनेचुरेशन स्टेप. जो बेटे हम टेम्परेचर है उसे हम 90 डिग्री से क्रॉस करवाएंगे, 94-95 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे. दिस 2 strands of the DNA will separate out and that process is known as denaturation. अब DNA जो आपका है सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए. नाउ वी विल ऐड प्राइमर. जब हम प्राइमर ऐड करेंगे, दिस स्टेप इज नोन एज एनीलिंग. और प्राइमर एक्सटेंशन करेगा. एक्सटेंशन किसकी करेगा? यहाँ पर इस डीएनए की कॉपीज बननी है, तो प्राइमर विल ऐड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. पर वो ऐड कैसे करेगा? बाय द यूज ऑफ द एंजाइम पॉलीमरेज. उसके लिए उसको क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज. पर अगर हम सिंपल डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे तो जो डीनेचुरेशन का हाई टेम्परेचर है उसको वो बेयर नहीं कर पाएगा और ये पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगी, एक्सटेंशन स्टेप नहीं हो पाएगा. therefore we have to use a specific enzyme which is the Taq polymerase, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लिया गया. ये एंजाइम हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है. अब इसके साथ जब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे, द डीएनए विल गेट पॉलीमराइज. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए की बेटे कॉपीज बन गई हैं. Then this cycle will be repeated again and again, and we will get amplified DNA at the end of this cycle. Now this is the description of PCR steps. The denaturation is done at high temperature, that is 94 degrees Celsius, to separate the DNA strands. Then annealing, in which pairing of primers is done. Then extension, in which we add the complementary deoxyribonucleotides by using the Taq polymerase. And here little bit information is given about Taq polymerase, that it is obtained from the bacterium Thermus aquaticus, and this is a thermostable enzyme. Thermostable means can tolerate high temperature. अब ये जो हमारे पास amplified DNA आ चुका है, इसको हम यूज़ करेंगे for the recombinant DNA technology. So this is the ligation of the DNA fragment into the vector. Foreign DNA which is treated with the restriction enzymes. With the same restriction enzyme we will cut the vector DNA, and then we will ligate
The target DNA and the vector DNA, it result in formation of recombinant DNA. Then it is transformed, equalized is transformed, means this recombinant DNA is inserted into the host cell. The host cell will divide and ultimately we will get the copies of the target DNA. And for transforming the recombinant DNA into the host, we use these methods: heat shock method, gene gun or ballistic method, and microinjection method. Heat shock method we will use for bacteria, gene gun for plants, and microinjection for animal cell. Now next step is obtaining the foreign gene product. The foreign DNA which will multiply in animal or plant cell, it is able to produce desirable proteins, and expression of foreign gene in the host cell involve ऑप्टिमम कंडीशन, ताकि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल जाए हमें डिज़ायर्ड क्वांटिटी में. तो हमें क्या करना है, उसको रिकॉम्बिनेंट सेल को कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम में मल्टीप्लाई करवाना है. मीडियम उसको देते जाना है, जो मीडियम वेस्ट बन चुका है या यूज्ड हो चुका है उसको ड्रेन आउट करते जाना है और फ्रेश मीडियम ऐड करते जाना है, ताकि फिजियोलॉजिकली एक्टिव फेस में रहें, वो सेल बार बार मल्टीप्लाई कर पाए, उसके पास रिसोर्सेज रहें. For this purpose, we will use the bioreactor, which will provide optimal conditions for obtaining the desirable product. And for this, we have to provide the optimum growth condition like temperature, pH, substrate, salts, vitamins, and oxygen. Now, what are bioreactors? Bioreactor is a cylindrical vessel in which biological process of culturing is done. If we want large scale production of the desired gene or the product or the protein, we will use bioreactors. The recombinant cell will multiply in this continuous culture system. These bioreactor vessels, in which raw materials are biologically converted into the specific products or individual enzymes, it provides optimum conditions for the growth of these cells, and these conditions are of temperature, pH, substrate, salts, vitamins, and oxygen. Now this is diagram of bioreactor. There are two types of bioreactors. First is simple stirred tank bioreactor. Next is sparked stirred tank bioreactor. These two are shown in this diagram. Again the diagram of simple stirred bioreactor. This diagram is given in NCERT book. Simple stirred tank bioreactor, in which these blades, flat blades, bladed impeller, ये बेटे रोटेट करेंगे कल्चर ब्रोथ को, ताकि ऑक्सीजनेशन हो पाए और प्लस वो अच्छे से ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन अच्छे से हो पाए, कल्चरिंग मीडियम जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो आपका बैक्टीरिया है या जो भी सेल आप चाह रहे हैं कि डिज़ायर्ड जीन हमें दे, उसे सारी ऑप्टिमम कंडीशंस दी जाती हैं, एसिड की, बेस की, मतलब पीएच कंट्रोल सिस्टम इज़ देयर. देन स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, की कोई अनवांटेड ग्रोथ ना हो, स्टराइल एयर अंदर डाली जाती है कि ऐसी एयर जिसमें कुछ और नहीं है, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है. दिस इज अ स्पार्क्ड स्टर टैंक रिएक्टर इन विच देयर इज these impellers are there, blades are there. ये रोटेट करते हैं एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ बबल्स एंड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर. बबल्स जो हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगे फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर. Now this is the description of stir tank reactor, which is a cylindrical or a curved base vessel. It facilitates the mixing of the reactor content, and stirrer facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. In sparked stir tank bioreactor, sterile air is sparked through the reactor. Bioreactor has an agitator system, that is oxygen delivery system, foam control system, temperature and pH control system, and sampling ports are there, so that small volume of culture can be withdrawn periodically. Now last step is the downstream processing. आपने कल्चर से उसको मल्टीप्लाई करवा लिया सेल को, आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट या प्रोडक्ट ऑफ जीन आपके पास आ गया, बट आपने अब उसको मार्केटिंग के लिए रेडी करना है. तो दैट प्रोसेस इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इट इन्वॉल्व प्रोसेसेस दैट मेक द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रेडी फॉर द मार्केटिंग. इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स, कुछ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, देन वी विल सेंड इट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स.
और ट्रायल्स होने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ येस दिस प्रोडक्ट इज good, then we will release it to the market for the public use. That's all for this chapter. Let's recapitulate that what we have done today. We have done about the steps of the recombinant DNA technology, which involve the isolation of the desired gene, cutting of the gene to get the fragments. Then these fragments are run on the electrophoretic gel. A desired DNA or the gene is eluted out. Then this eluted DNA is ligated with the vector molecule and inserted into the target cell by the process of transformation. Then we will, if there is the gene of interest is not in large quantity, we can amplify it by using PCR method, which involve the step of denaturation, annealing and extension. By using this process, we will get multiple or million of copies of desired DNA. After ligation, after transformation, we will add this to the continuous culture system in bioreactors and isolate the desired multiple copies हमारे पास gene की आ जाएंगी. Then we will do the downstream processing. Bioreactors are of two types: simple stirred bioreactor and spark stirred bioreactor, which has pH temperature control system, and there is sterile steam or air is inserted into it, oxygen delivery system is there, form control system is there, ताकि continuous culture में हमारे पास desired bacteria या desired cell ही grow करे, कुछ unwanted growth ना हो. And then after isolation of the desired gene, हमने इसे market के लिए तैयार करना है. तो market के लिए तैयार करने से पहले हम इसको प्योरीफाई करते हैं, उस कंटेंट को. अगर जीन है तो जीन को अलग कर लो, प्रोटीन है तो प्रोटीन को अलग कीजिए, प्योरीफाई कीजिए. देन इस सैम्पल को ट्रायल्स के लिए भेजने के बाद जब हमें श्योरिटी हो जाती है, देन वी विल रिलीज इट इनटू द मार्केट. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू एंजॉयड दिस. थैंक यू.